Good evening, everyone, and welcome to JEEnius series, an exclusive series of webinars to help you boost your JEE preparation in the last few days and put your best foot forward in the exam. Today, we are going to learn about master tips and tricks to crack JEE with Aakash experts. I'm your host for the evening and will be moderating the discussion today. We are joined here today by our fantastic panelists who have been teaching and mentoring students for years and have worked hard along with them to help them pursue their dreams and achieve their goals. So let's welcome our first panelist, Mr. Ajay Sharma, the National Academic Director at Aakash IIT JEE. He's also a distinguished chemistry faculty and has more than 16 years of experience in teaching and mentoring students for engineering entrance examinations. A very warm welcome, sir. Thank you, Kama ma'am, for giving this great opportunity to interact with the student before JEE exam. Our next panelist is Mr. P.K. Sharma, Zonal Assistant Director, Academics at Aakash IIT JEE. He is also a distinguished mathematics faculty and has more than 32 years of experience in teaching and mentoring students for engineering entrance examinations. Welcome to the session, sir. Thank you, Kama ma'am, and hello, everyone. Also joining us today is Mr. Nabin Karki, an distinguished physics faculty. He has more than 17 years of experience in teaching and mentoring students for engineering entrance examinations. A very warm welcome, sir. Thank you, Kama ma'am. Honor and privilege both to be part of such a wonderful platform. Thank you very much. So students, in today's session, we will talk about what to do in the last days before the third session of JEE Main 2021. Strategy to score higher in mathematics, physics, and chemistry, how to make the best use of 3 hours of exam time, do's and don'ts for JEE Main 2021. So we have already received a lot of questions from many of you who are joining us today. Thank you for your questions. Apart from that, we'll be happy to take any additional questions if possible during the webinar. You can share them in the comment section below. Additionally, considering our viewers are from across the country, we will try our best to conduct the webinar in a bilingual mode so that every one of you can reap its maximum benefits. So let's quickly dive into the session now. The JEE Main 2021 for session 3rd and 4th have already been announced, and now with session 3 to be conducted in the coming week, I'm sure a lot of students are baffled and want to know what to do in the last days before the exam. So why not just hear it from our experts? So over to you, Sharma sir. Yeah, right. I mean, the examination is so close now. This third phase of IIT JEE exam is a challenging exam. In general, few things I would like to share the students must do in the coming couple of days. One is the state of mind. You have to keep yourself in a very happy, very positive state of mind. That is called, somehow you have to do that mind conditioning so that that anxiety, which is a natural thing to happen to anyone before the examination, doesn't start building up beyond the limits. So keep yourself in a very happy state of mind. It could be, feeling things which are good around you, thinking good about yourself, not of what you will achieve, but what you have achieved so far. You can go for a nature walk, go to a park, try to, develop a proper body clock, which matches with the examination day when you are supposed to be at your best. So these are few things which one have to keep in mind for the next 2, 3, 4, 5 days. The body clock, very important. I would suggest try to go to sleep early, get up in the morning, try to take a walk, good nourishing food, avoid greasy, oily foods, so that you feel good about yourself. You feel very positive about yourself. क्योंकि जब हम perform करने जाते हैं, if I am in a very happy state of mind, तो anxiety मुझे तंग नहीं करती है. I am motivated, I am happy, I am going to face something which is going to be very good for me. You keep sending positive messages, you keep positivity around yourself, perhaps you would be able to give your best on that particular day.
So this is very important to remain in a very positive state of mind, frame of mind. You are surrounded by positivity and try to reduce that anxiety that, oh, my exam has come, only 2 days left. What should I do? No, you know what is that you are supposed to do. You shouldn't be asking, what should I do? Ask your friends, reaching to people. और दोस्तों में हम लोग बात करते हैं क्या करें तुम क्या कर रहे हो what are you doing what should I do so try to avoid all those things you should be filled with positive energy surrounded by positive energy state in a positive state of mind. Number two, when it comes to academics, my studies, what should I do? So try taking a mock test every day exactly at the time when your examination is scheduled, that is according to your slot which has been allotted to you, because you should be best at that point of time. This mock test should be, you should give a feeling to your mind that this is the real exam. I'm going to face the actual thing, so that you are already prepared mentally for that particular day. So take that test. Number two, second question comes, what should I revise? How should I revise? So revision, my advice should be to the extent of keeping you engaged. I mean, remain engaged with your studies for 2, 3 days. It could be, revising some important formulae. It could be like at Aakash, we provide formula crunch, formula crisp mind maps for different chapters. If you have something like that, please go through them, but not for the fear that I might forget something on examination day, so let me do. The moment that feeling comes to us, I might forget something that day, so I should do this. I might forget this, so I should do this. That means you have already started sending negative signals to your mind. You might miss out on many occasions, many things, many formula, many problems. So not for that, but engage yourself right from morning till the day, a happy, healthy lifestyle. Engage with revision. I mean, few important things, if at all you want to revise, but not as I suggested for that kind of fear sinking in, no, I might forget. Before the examination, in general, if I start looking at it, okay, what do I know? If you ask, what do I know? The answer would always be, you know almost everything, a lot. But if I start asking myself, what are the things which I do not know or I might get stuck up? So a lot of, things start coming in front of me. They push me to the negative side of it. They give me some negative energy. So don't think about things you do not know or you might forget. Think about quite a lot. It's a challenging paper, low scoring examination, so don't worry much. The more cooler you are, more composed you are, more happier you are, perhaps you would be able to do according to perform according to your own potential, right, Kama? कामा मैम आपका माइक म्यूट है. Yeah. So we can conclude by saying that positive state of mind is what students need right now when the exam is like in the coming week itself. Then their body clocks should match the exam day. They should take a mock test, a practice test at the same time when they will be, giving their test. And apart from that, if they want to revise something, they should be engaged throughout the day, revise mind map, etc. Not with the point of view that they might forget, but only to strengthen their preparation. So moving on, Nabin sir, would you like to add something over here? Yes, I'm excited to. First of all, Kama ma'am, with very few days remaining for the exams, अब जो है स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रैटेजी में एक मेजर चेंज लाने की जरूरत है. जितना इकट्ठा करना था दैट्स बीन डन. जितना ज्ञान लेना था हो गया. अब ज्यादा लालच नहीं करनी है. You stored enough amount of potential energy. Now you got to think, how are you going to convert this potential into kinetic?
अब बिकॉज मेरा जो ऑडियंस है अब जेई मेन एस्पायरेंट है, सो आई थिंक फिजिक्स एनालॉजी विल वर्क. सबसे बड़ी समस्या इस समय जो आती है, मेजर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स अब धीरे धीरे रेस्टलेस होने लग जाते. यस, दे स्टार्ट गेटिंग रेस्टलेस. यू नो, द प्रेशर स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, द प्रेशर स्टार्ट्स माउंटिंग अप. और मैं समझता हूं कि अगर आप ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इससे एड्रेस करें तो आप बड़े मजे से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे. सो लेट्स फोकस ऑन दैट, शैल वी? अब आप पूछेंगे कि ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, बच्चे पूछेंगे कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो समझ आ रहा था बड़े मुश्किल से, नाउ व्हाट इज दिस न्यू साइकोलॉजी? लेट मी सिंप्लीफाई. Let me share 3 important points, and these points are going to act as a guide map. पहला, बहुत लोग तो जेई मेन की रेपुटेशन के बोझ तले इतने दबे कुचले हैं कि वो अपने नेचुरल फ्लो को ही भूल जाते. Yes, actually, well, reputation has to be saluted, but on the street, not on the gate. अरे ठीक है भाई, एग्जाम है, अग्रीड, लार्ज मैग्नीट्यूड का है, बट एग्जाम हॉल जाके क्वेश्चन ही तो सॉल्व करोगे, किसी ज़ॉम्बी के साथ फाइट तो नहीं करनी है. और अब तक न जाने कितने एग्जाम्स में आप अपीयर हो चुके हैं. याद करो वो क्लास 10th के दिन, भाई बोर्ड से पहले प्री बोर्ड, और आजकल तो स्कूल वाले जो है प्री बोर्ड प्री स्क्वायर बोर्ड भी लेने लगे. और उसके ऊपर भी आप जहां कोचिंग या ट्यूशन में जाते हैं, एटलीस्ट 3 और एग्जाम्स तो आपने अटेम्प्ट किया ही होगा, है ना भाई? इस एग्जाम को इतना भी डेविल ना बनाओ कि हाथ पैर 7 दिन पहले से ही फूलने लगे. गो वेरी नेचुरली, टेक इट वेरी वेरी नेचुरली, गो एट योर कंफर्टेबल मोड. सो दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, कामा मैम, अगेन इफ यू अलाउ, आई विल यूज अ फिजिक्स एनालॉजी. एक हाइड्रोडायनामिक्स में बच्चों एक टॉपिक है बर्नौलीज प्रिंसिपल, पढ़ाने नहीं जा रहा हूं दिस टाइम लकीली. बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ यू वांट टू लोअर द प्रेशर को अगर डिक्रीज करना है तो क्या करते हैं? इंक्रीज द स्पीड. इस प्रिंसिपल को एक बार डेली लाइफ में भी यूज करो. एग्जाम है, जेई मेन है, मतलब बस यही सोचते रहोगे तो प्रेशर है ना जो मेगा पास्कल क्या गीगा पास्कल तक में चला जाएगा. मोशन में आओ तभी प्रेशर डिक्रीज होगा. जनरेट दैट स्पीड. अब आप पूछोगे कि मोशन में कैसे आए? अरे पार्क में भागने के लिए नहीं कह रहा हूं, बताता हूं कैसे. देखो, जेई मेन तो आपका एग्जाम लेगा ही, उससे पहले खुद ही अपना एक बार एग्जाम लो. मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इनफाइनाइट टाइम्स आप दे चुके हैं, तो फिर लिखो आपके कॉमन मिस्टेक्स, आपके कॉमन ट्रेंड, आपका एक पैटर्न मिस्टेक्स, उसे आप लिखो. जैसे कि हो सकता है आपका एक पैटर्न है, सही सॉल्व करते हैं लेकिन गलत बबल पे आप मार्किंग करते हैं. अब एक बार लिख लिया, अब सोचो कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे रिजॉल्व करोगे. जैसे कि वन ऑफ द वेरी कॉमन अप्रोच इज, you solve the question and without giving a second thought you start bubbling. This may have created that problem. एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टेक अ पॉज मे बी ऑफ अ सेकेंड, मेंटली अपने आप को कहो कि द ऑप्शन इज बी, बस इतना ही कहो, टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे. The moment you take a pause and mentally you say this thing within yourself, chances are you would in the most case go and hit option B. मतलब दिस इज वन एग्जाम्पल. इससे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन. और बच्चों ये एक बहुत इफेक्टिव हैक है. होता क्या है, द मोमेंट यू राइट योर प्रॉब्लम्स, द मोमेंट यू राइट योर ड्रॉबैक्स, all the negative noise which was flooding your brain, which was hijacking your mindset, that would be washed off. Do it, you would be surprised. It works, it really works. और आखिर में आप पाएंगे कि आपका ब्रेन तो बस प्रॉब्लम्स को अनड्यूली एम्पलीफाई कर रहा था. कॉमन एमिटर एम्पलीफायर नहीं है, सिंपली एन एम्पलीफिकेशन. ओके, द प्रॉब्लम वाज गेटिंग एम्पलीफाइड एंड यू वुड रियलाइज दैट प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी थी ही नहीं. It's something like, opening a chips packet. The air is gone, bacha, little amount of wafers. So that air is the problem. And you see that, in fact, consumes the major volume of your brain, specifically as a time. Number 3,
एक डेफिनाइट स्ट्रेटेजी बनाओ फॉर योर एग्जाम डे, मतलब आज की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर योर एग्जाम डे. लाइक in what order would you like to attempt the paper? Physics first or chemistry first? This is purely your personal setting. Go as per it. Just listen to yourself. Just see what works the best for you. You know, the moment your brain starts focusing on strategy building, you would be diverged away from the problems. And that's the secret. Yes, it matters what you do, but most importantly, it matters how you do. सो अभी आप एक स्ट्रैटेजी बनाने पे फोकस करें. इसके ड्यूअल बेनिफिट्स है. ए, माइंड विल बी फोकस्ड ऑन सॉल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम. बी, in the exam day, since you would be busy acting on your strategy, the mind does not get the bandwidth to panic. मौका ही नहीं मिलेगा, because you are completely filled with what's my strategy, how am I going to execute it. So strategy बनाओ for that particular day. So let me just recap. A, go naturally. B, write your common mistake pattern and its rectification. Number C, make strategy for the exam day beforehand, abhi, immediately. I think that's all from my side. Very well said, sir. So Ajay sir, would you like to also add something over here? Yeah, yes, ma'am, sure. Like both the sirs, PK Sharma sir and Karki sir explained very well how to make a strategy for the JEE exams. But I would like to add one more thing. When you're preparing your strategy, then you should think one major thing that is a important part of crack the JEE, and whosoever preparing for the JEE exam, how they can excel in the performance. Number one thing is accuracy. So when you are preparing for the exam strategy, then you should not be greedy. Like already Nabin Karki sir explained, forget about the greediness. You should manage your strategy how I can complete the maximum number of accurate answer. Like suppose in a JEE main, you will get the option of section A 20 question and section B 10 question. Out of 10, you have to attempt only 5 questions, right? You can think if you attempt 20 questions out of 30 questions correctly, and in all the 3 subjects, total number of questions are 60. So you can check how many percentage you are scoring. If this kind of strategy, होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि सारा पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बनाते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस दिखते हैं सबको अगर उसमें 50% भी कॉन्फिडेंस है उसको वो टिक कर देते हैं. बट इन एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, if you are attempting all the questions, there is might possibility of negative marking as well as possibility of wrong attempting also. Because if you are confident 80 to 90%, then you can take a risk. But if you are confident only 50%, and if you are attempting all the questions, there's a major chances your score will be go down. So the first major thing is you should attempt the paper, whatever the sequence guided by the teacher and what you want. Like suppose if you are perfect and if you are confident in a maths, then you can start from maths. If you are confident in a chemistry, then you can start from chemistry as well, or physics. But when you confident, then you start, but keep the accuracy side, because attempting the all the questions, if you are really confident, then you can attempt the questions, but you can save the time. Like suppose if I am attempting questions in a physics 20 questions in a first attempt, chemistry 20 question, and then maths 20 question, right? Total 60 question. So you would be more confident, and when we attempt the questions in a first go, then the accuracy is a more than 90 or 95%. There's a rare chances if you are confident and if you are attempting wrong, because there's a silly mistake, maybe calculation mistake. And if you are attempting only 20 question, you will save the time as well. आपके पास 1 घंटे का टाइम है एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का, 25 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 4 मिनट पर क्वेश्चन, सॉरी मोर देन 2 मिनट आपको पर क्वेश्चन का आपको अटेम्प्ट करने का टाइम मिल रहा है. लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं तो उन क्वेश्चंस के ऊपर आपको स्ट्रेटेजिकली एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा. सो
I think you should focus on accuracy. And before the exam also, when you are appearing in any kind of a mock test, try to restrict the limitations. I will attempt only 23 question of each subject. Means अगर आप 5 to 6 क्वेश्चन पेपर में पूरे में छोड़ भी देंगे तो वहां पर स्कोर इतना डाउन नहीं जाने वाला है. वॉट एवर द रैंक यू आर गेटिंग, ये बहुत डाउन नहीं जाएगी. लेकिन अगर आप सारे 20-75 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, दिस इज अ फेयर इनफ चांस टू नेगेटिव मार्किंग. जहां पे 50% कॉन्फिडेंस है और आपने टिक कर दिया, नहीं लास्ट में टाइम बच रहा था 5 मिनट, आई हैव टिक मार्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो, कि क्या पता बाई लक मिल जाएगा. बट ऐसा एग्जाम में और कॉम्पिटिशन में कभी भी लक वर्क नहीं कर रहा. यू डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑलरेडी. You are preparing for this exam for this exam day from last more than 2 years. Because so right now you should be very confident. You learned a lot of things, you know very much. And before the exam, like Sharma sir already cleared that you should be very happy mind. Because when you are feel happy, then the different kind of the positive hormones in your brain will secrete, and definitely your recalling capacity of the brain will improve. So exam में हमें क्या चाहिए, हमें जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो अगर स्ट्रेस एंजाइटी कम होगा, देन आवर ब्रेन रिकॉलिंग कैपेसिटी एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा फ्रंटल ब्रेन है, वहां पर उसका जो एक्यूरेसी और अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटजी है वो और भी स्ट्रॉन्गर होती है. सो इफ यू आर अवे फ्रॉम द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, डेफिनेटली आपकी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होगी, आपका जो अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी है वो बेटर होगा, और आप परफेक्टली डिसीजन ले पाएंगे. बिकॉज व्हेन वी वांट टू टेक एनी बिग डिसीजन, because for competitive exam, for in this age for you it's a big decision कि एग्जाम डे वाले दिन हम क्या करते हैं. I have observed many times in even I'm mentoring lot of JEE aspirants year on year. So मैं देखता हूँ कि जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा होता है और जो 100 रैंक वाला बच्चा होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता. The difference only the exam day, how you are preparing, how you are attempting your paper, how you manage your strategy, how what you think before 2-3 days of exam. So before 2-3 days you should be very cool, and you should be very you should feel very happy. और आपको अपना देखना चाहिए कि I know everything, I read entire things 5 to 6 times for the last 2 to 3 years. and उसके बाद में हमें एग्जाम से पहले जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि एक्यूरेटली हाउ मेनी क्वेश्चंस आई कैन अटेम्प्ट. तो अगर आप 23 ही कर सकते हैं, देन ट्राई 23 फर्स्ट इन वन सब्जेक्ट, देन सेकंड सब्जेक्ट एंड थर्ड सब्जेक्ट. हो सकता है कभी कोई सब्जेक्ट इजी आए, लाइक आई कैन से केमिस्ट्री इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, तो केमिस्ट्री हमेशा इजी आती है. मैथ्स में ट्विस्ट होता है, फिजिक्स में ट्विस्ट होता है, बट केमिस्ट्री डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आती. अब वहां पर आपको लगता है कि पूरे क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंट है और पूरे आते हैं, देन यू कैन अटेम्प्ट, बिकॉज केमिस्ट्री इज ए स्कोर बूस्टर, आपका स्कोर इंप्रूव करेगी. इन मैथ्स एंड फिजिक्स यू नीड अ कैलकुलेशन एज वेल. सो बिफोर द एग्जाम यू नीड to make a strong strategy and keep focus on accuracy. Definitely your score and your rank will improve what you deserve. Thank you so much, sir. Talking about strategy, this brings us to our next question. So mathematics, physics, and chemistry, all the three subjects are equally important when it comes to cracking JEE with a good score. So now our academic experts will share subject-wise important tips and tricks that will help you score higher in the exam. Over to you, Sharma, sir. Yes, I mean, about how to deal with the subject or how to manage those 3 hours is very important. One is, by now you must have given a lot of tests, mock tests. So set a realistic goal for yourself subject wise. If I have been scoring about 50% in maths, you should be happy with that 50%, I mean, aspiration or target for yourself. Convert it into marks, convert it into number of questions. I would be happy. I have been, you know, striking about 15 questions in the paper in the past. So you should be happy with those 15 questions. The question comes how to pick and choose those 15 from mathematics. Mathematics has a problem. Every question looks very familiar at JEE mains level. You read it,
and then you try to move forward. आप उसमें time उसके साथ engage करते हैं, time spend करते हैं, without realizing कि calculation might be lengthy. So pick and choose, set a realistic target, 15 questions, 20 questions, 10 questions, depending upon your confidence level over the subject. Now, in mathematics, every question has, in general, 2 or 3 inputs. That given information, that input is very important. So read the question very carefully. These 2 things are given to me. Then comes, what is the output expected from you? What is desired to be solved? Then try to find the link between the given information and what you have to conclude. Second important thing, look at the options also. At times, the options give you a hint, a clue that the given input to be processed through the formula and the basics that you know, and you need to bring it out in this desired format of the 4 given choices. So in the beginning, when you start attempting mathematics, you should be very choosy about it. Pick up at least first couple of questions where you feel while reading itself you got the message, okay, yes, it's very simple, very familiar to me. Once you have striked positively 2 or 3 questions, automatically your brain will start, will become active, और हम और भी ज्यादा क्वेश्चन ले पाएंगे. एक प्रॉब्लम क्या होता है जनरली बच्चों के साथ, रियलिस्टिक गोल सेट नहीं है. हम हर क्वेश्चन को उठाते हैं, द वे वी वॉक ऑन द रोड, सड़क पे पड़े हुए हैं पत्थर, हर पत्थर को हम ठोकर नहीं मार सकते. अगर पत्थर बड़ा हुआ तो हमारा टांग भी टूट जाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव इन टेकिंग अप ए प्रॉब्लम, क्योंकि जब मैं 2-3 क्वेश्चन में टाइम स्पेंड कर लूंगा मैथमेटिक्स में, कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, मार्क नहीं कर पाऊंगा, सडनली दैट एंजाइटी, प्रेशर, वो पसीने छूटने लगते हैं, एमसीबी ट्रिप हो जाती है, और फिर जो आता था वो भी निकल जाता है. सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, set a realistic target for number of questions. Even whether the paper is easy or difficult, feel happy about it. If you are left with some more time for that subject, you can review, scan it again. So be selective in picking up the questions. Don't miss on any input given in the question, because remember that input only leads to your brain working on, the processor working on, this is the input given to me, this is the output expected from me, how to process this given information and get the desired result. So that is mathematics. And before the paper, few topics, few chapters, everybody knows. Mathematical reasoning, in general, a question is asked, very easy. Statistics, one question is asked, is very easy. Quadratic equation, the students have been doing it right from class 9, 10th onwards. In general, very easy. So try to, shortlist 7, 8, or at most 10 questions. You would be more confident according to your strengths. Maybe you can choose higher number of questions, but at least 7 to 8 questions are usually very easy, very direct. The problem is we fail to identify, because as I said कि हम हर पत्थर को हिट करते हुए जाना चाहते हैं. हम ये उम्मीद करते हैं कि so far I have been scoring 50% marks in maths. Suddenly मेरा कुछ लक चल जाए और आज मेरा पूरा 25 क्वेश्चन सही हो, I should be able to score 100%. No, it's not going to work that way. It is not going to happen also that way. 1 or 2 questions here and there, luck favors. आपको फायदा हो सकता है, but be realistic about, your targets and number of questions you are going to hit. Over to you, ma'am. Thank you so much, sir. So next, Nabin sir, could you also share about your subject, physics? Yes, certainly. More or less, जो strategy की अगर बात है, then it's very much similar to mathematics. वैसे भी JEE mains में बच्चे जो है maths और physics दोनों cousin तो है ही है, because you reach all algebra, graphs और algebra तो आप physics में use करते ही हैं. तो lot many times 20% of time physics teacher lands up teaching mathematics. that happens. तो strategy भी मैं 20% वहीं से I can borrow.
And the idea is exactly same. First of all is you need to understand the question, जो recent trend की अगर मैं बात करूं, so please don't think that question बहुत difficult levels के आएंगे. हो सकता है एक या दो would be something like that. Otherwise, it's a very patterned question. और अगर पिछले बार, just 2 phases, 2022 phases, if we just analyze, I think it's 2021. तो उसमें ये है कि आप लगा लीजिए पेपर 1 में, like if I consider phase 1, तो first paper में if there is a question in electromagnetic waves, in the second also there was, in the third also there was, in the fourth was also there was. तो ऐसा लगता था the question framing process was very mechanical कि पहले हमने apportion कर दिया है और उसके बाद हर एक टॉपिक में या हर एक पेपर में उन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे थे. So the moral of the story is paper is going to be very much deterministic. बहुत random out of the box सोचिए मत, और इस चीज के लिए आप JEE Advanced को ये जिम्मेदारी दे देना. They are certainly going to show their muscular power. But as long as JEE Main is involved, it's going to be very, very much deterministic. So I think this is also going to be a very important statement. Second जो है, as what sir said, examination time जो है, it's a very skill-based game. आपने कितना academics इकट्ठा कर लिया, now how are you going to portray it? That is the main thing. हम हमेशा स्टडी प्रोसेस में इस बात पे फोकस करते हैं what to do, how to solve it, but we don't focus on what not to do. Does that make sense? So you have to have a very clear idea that this is not my domain, और यहां पर मैं कोई मस्कुलर फाइट के लिए नहीं आया हूं. इट्स एन एग्जामिनेशन. आई नीड टू हैव अ स्ट्रेटेजी, आई नीड टू हैव अ क्लियर माइंडसेट कि अगर इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ जाए, इससे बेहतर कि मैं उसमें टाइम खराब करूं. इट्स वर्थ लिविंग इट. तो एक फिजिक्स में हो सकता है कि सभी को सबके एक फेवरेट डिफिकल्ट टॉपिक है. लाइक सम पीपल स्टार्ट द ब्लॉग विथ #I hate rotational motion and all. तो आप उस ट्रेंड का अगर फॉलोअर है तो देन लीव रोटेशन. दैट्स नॉट अ पॉइंट. द लास्ट मोमेंट इज समथिंग दैट यू नीड टू एनकैश. नंबर 3, आपका जो प्यारा साथी जो डायमेंशन है उसे हमेशा दिमाग में लेके चले. लॉट मेनी टाइम्स ऑप्शंस को जब आप फिल्टर आउट करते हैं, एग्जामिनर इज अ बिट काइंड इनफ कि 2-4 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस ऐसे दे देते which is dimensionally inconsistent. So that in fact narrows down your filtering process. तो आप फिल्टरिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं. The next point, फिजिक्स में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं. एक, not looking at the graph parameters very carefully. Like अधिकतर केसेस में we practice the kinetic energy versus time graph, but हो सकता है कहानी में एक ट्विस्ट आ जाए. So it may be the kinetic energy versus x-axis, या kinetic energy versus time, या velocity. The conclusion is that ग्राफ के जो पैरामीटर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से देखें. And बाकी otherwise you can specifically, अब इस मोमेंट पे आके with handful of days, I think 2 to 3 days ही बचा है, I would not like to go into the topic कि मैं आपको descending order में priority index बना दूं कि start from this particular topic. But एक चीज जो पहले से आपके माइंडसेट में प्रिपेयर कर दूं, so that examination hall में जाके you would not say अरे ये क्या हो गया, that surprise factor को मैं remove कर दूं. I call a certain bunch of topics as dark horses. अब जो ये JEE के बच्चे, don't think that I'm going into biology, horse, mammal or something like that. It's an English phrase. Dark horse का मतलब है एक टीम या एक कंपटीटर जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई थी, but suddenly that comes out to be the winner. Like say for example, just imagine Zimbabwe is winning the T20 match. So the commentator would say the same thing. Oh, Zimbabwe has come out to be the dark horse. तो JEE मेन के रेस्पेक्ट में देयर आर डार्क हॉर्स टॉपिक्स, और ये एक ऐसे टॉपिक्स है जो JEE एडवांस में नहीं है बट ओनली JEE मेन में है. और JEE मेन पैनल अपना DNA अलग दिखाने के लिए दे एंश्योर कि बाकी में से तो क्वेश्चन आए ना आए, बट वी आर गोना पुट द क्वेश्चन फ्रॉम द डार्क हॉर्स. मैं लिख लो आप. I'll start with class 11, simple harmonic motion में damped oscillation. It's pretty, almost an open secret you would get a question, और difficult नहीं होते question. Now if you come to class 12 में भरे पड़े, like start from magnetism and matter, permanent magnet, earth magnetism, geomagnetism, then you come to electromagnetic wave, short and sweet topic, एक lecture का topic है, but
a guaranteed scheme, you get the question out there. Wave optics mein aa jaiye, diffraction, polarization. These are not in JEE Advanced, but only in JEE Main. You go further, in modern physics, extreme or jai, you talk about semiconductor, you talk about logic gate, you talk about principle of communication. Ab dekhiye, there are 7 or 8 topics. They are dark horses. So make an expectation. और खास तौर से इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में ज्यादातर बच्चे एक माइंडसेट बना के चलते हैं कि they simply follow the JEE advanced syllabus meticulously, while as a matter of fact it's JEE main, it's different. तो इसके नब्स को आप पकड़िए. That's one thing. And eventually एक चीज बताऊं, physics है and we have experiment. So experimental topics say you can expect, I would rather guarantee, it's a guaranteed feature, एक question experiment से आएगा ही आएगा. It could be vernier caliper, it could be screw gauge, it could be simple pendulum, it could be resonance column, it could be post office bridge, post office box, meter bridge, potentiometer, and the displacement method in the convex lens. कहीं से एक question आएगा, because the people want you to get oriented towards the experimental domain. So these are the things, इन्हें ध्यान रखिए. और मैं अभी भी repeat करूं, just make a strategy, chalk out that strategy. Strategy बनाएंगे, होता क्या है ना, examination day में you are completely just engaged. How am I gonna implement this strategy? बस उस बात पे जब focus रहेगा, problem दूर, परेशानी दूर. So that is all about from my side. Thank you, sir. So we have already heard the strategy about mathematics, then about physics. Now it's time to hear the strategy that should be followed for chemistry. Over to you, Ajay, sir. Sir, you were on mute. Yeah, thank you, Kama ma'am. So for engineering students, most of the students don't like the chemistry as much as maths and physics. So, and they always try to avoid the chemistry because they feel the chemistry is something different. Physical part they like because they are analytical mind and they love the calculations. But in organic chemistry and inorganic chemistry, they need to learn, revise, and some things need to mug up. So most of the engineering students avoid. But I would like to tell all the students, chemistry is a very easy subject and a scoring subject for JEE point of view, because already we are discussing a lot of on a strategy. So in a competitive exam, how much score you are scoring, that decide your rank. So if any subject which is having the equal importance and the difficulty level is lower side in a chemistry, so strategically you can score higher marks in a chemistry by putting a little efforts only. Like suppose if I talk about the first physical chemistry. Physical chemistry is the calculation based, and all the engineering aspirants are love the calculations, and the numericals coming in exam, that is only NCERT based. So don't worry about the JEE main calculation in a physical chemistry. The part 2 is organic chemistry. So in organic chemistry, there's a sometime confusion because some part of organic chemistry student covered in 11th class and some part of organic chemistry they are covering in a 12th class. But when you enter in 12th class, you forget the organic chemistry, what you learn the basic in a organic chemistry, in a GOC and other parameters. So if you are confident in your general organic chemistry or basic concept of organic chemistry, then definitely you can perform excel in a organic chemistry, any kind of questions. Most of the questions out of, if I talk about, if suppose 30 to 35% organic chemistry questions are coming in exam, then in 35%, if I talk about the 8 to 9 questions in organic chemistry, then 2 to 3 questions are coming from the general organic chemistry, which maybe can relate with any chapter, but it's basic on the basics only, like acidic parameter, basic parameters, nucleophilicity, and electrophilicity, based on the reaction intermediates, based on the reaction mechanism, type of reaction mechanism. So these are the basic concepts. So it can be connected with the any other topic, but from the basic chemistry. So out of 8-9 questions, 3 to 4 questions will come from the general organic chemistry. The remaining part is there's a lot of reactions. So student always confuse what to read and what to leave.
So my concern is in organic chemistry, you should focus on the type of name reactions that are given by the scientist name, or maybe on the basis of mechanism. So there is around 40 to 50 hardly name reactions. So you should know about the mechanism of that name reactions, and most of the questions are connecting and related to those name reactions only. And this is the great thing. Before the exam also, these 40 reactions you can revise in a, I think, more than within a 50 to 1 hour. If you want to revise all the type of Riemann reaction, Wittig reaction, Woods reactions, all kind of reactions, you can just check. There's a fixed reagents and fixed intermediates are there, and there's a particular fixed reaction mechanism. So whatever the questions are asking, mostly what kind of the product would be in these reactions, and many times the direct which is this reactions. So if you identify the reactions and reagents, then definitely you can correct the answer very easily. So it's not a very large twist and any kind of depth mechanism. Simple, you just go through the all the type of name reactions. And the third part is a very boring part. The students are understanding that inorganic chemistry, because we have to mug up the entire inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि बच्चा हमेशा डरता रहता है, एंड जब हम किसी चीज से दूर भागते हैं तो वो हमें ज्यादा टफ लगती है. लाइक इन बिहेवियर साइकोलॉजी में आई थिंक मैं एक बता सकता हूँ. इफ यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद समवन, देन यू स्टार्ट लविंग इट. लाइक अगर आप किसी भी चीज के साथ में अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आप उसे अपने आप ही लाइक करना स्टार्ट कर देंगे. द रीजन ऑफ केमिस्ट्री, आई थिंक लोग समझते हैं कि बच्चे समझते हैं कि केमिस्ट्री बड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम. यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विथ योर मैथ्स, सेकेंड नंबर फिजिक्स, एंड थर्ड नंबर केमिस्ट्री. दैट इज वाई यू आर नॉट लाइकिंग केमिस्ट्री एंड यू आर लाइकिंग द मैथ्स. But in inorganic chemistry, it's totally purely on NCERT based. अगर आपने NCERT को अच्छे से पढ़ा है 11th क्लास में, 12th क्लास में, और I think before the exam you have revised many times, so you should have faith in your ability कि जो पढ़ा है वो आपको याद है. And if you remove your stress and anxiety, definitely your recalling capacity will improve. तो वो NCERT के जितने भी facts है वो सारे आपको याद रहेंगे, एंड यू easily can crack the inorganic chemistry. So ultimately the three part of chemistry are very easy, and the questions are coming in last year exams. recent trend की अगर मैं बात करता हूँ 19 and 20 के जो टोटल 32 पेपर्स है, आप उसमें देखेंगे तो पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इजी क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपने एक घंटे में से अगर 45 मिनट भी इफेक्टिवली अगर उस पर फोकस किया, देन यू कैन अटेम्प्ट एंटायर 25 क्वेश्चंस एंड विद ग्रेटर accuracy. Ajay sir, talking about NCERT, we have a live question also from a student called Tarushi Shekhawat. So she is asking, is NCERT pattern, reading NCERT sufficient to crack JEE main? Yeah, sure. In chemistry, I can say reading NCERT for organic chemistry and in organic chemistry is very much sufficient. For physical chemistry, it's just concept based, and you learned a lot of concept in physics and maths as well. So definitely physical chemistry is a easier part for any JEE aspirants. But organic and inorganic chemistry, if you focus NCERT, and before the exam also, if you are revising the only NCERT, it help you a lot of. Thank you so much, sir. That was indeed helpful. So, Sharma sir, we have another live question from Adi Yogi. He's asking, how can I get a good score in physics and overcome the fear of physics? See, I mean, if he's talking about this forthcoming thing, the key for physics or mathematics to score good marks is be realistic, be choosy selecting problems. Don't try to hit all 25 questions. At least in the subject you are low on confidence. जहां पे मेरा कॉन्फिडेंस कम है, मैं अपनी स्ट्राइक रेट को कम करूंगा और एक्यूरेसी ज्यादा रखूंगा. और अपने मन से निकाल दे, आई एम वीक एट फिजिक्स, आई एम वीक एट मैथ्स, आई एम वीक एट केमिस्ट्री. व्हेन वी फेस JEE kind of paper,
at times we feel paper is difficult. So it is difficult for all. If it is easy, then it is easy for all. I go with expectation to examination hall कि मेरा mathematics weak है, maths का paper easy आ जाए तो I'll feel happy. No, it will be easy for all. Then scores will go up, percentiles will change. So within few days, I don't see really something great happening in physics. But for the next phase, you have to make a strategy. The chapters which are troubling you, focus a little more on them, at least the basic concepts. And even if one solves the previous year archive questions, we at Akash, we have been running that archive test series. So take up last 4 5 years question papers as test, improve your scores and feel confident about it. I would add to Ajay sir what he said, कि chemistry, it saves me time. It allows to spend a little more time on mathematics and physics in the examination hall. केमिस्ट्री का क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो पढ़ने से ही आपको पता लग जाएगा वेदर यू नो इट और यू डोंट नो इट. आप उसको चेज नहीं करते, ट्राई नहीं करते, उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करते. So you can very easily save upon some time from chemistry portion, and then you can utilize that time to physics or maths where maybe you have lengthy calculation problems. Right, Thank you. Kama ma'am? Yeah. So thank you so much, sir. Let's take another live question. That's from Ishita. So Nabin sir, Ishita is asking, how can I study physics and understand it in an easy manner? Ishita, in fact, this is one of the very generic question. Physics mein kya hai? It requires an aptitude. Now, some people are born with aptitude and some people have to grow the aptitude. Ab sawal hai, can we grow the aptitude? The answer is absolutely yes. A live example is speaking in front of you. I was very much weak in physics during my school days. But, during the preparation phase, during the preparation journey, I understood a mantra. देखिए, upcoming phase 3 के लिए तो ये काम नहीं आएगा because there is no any short hack या 1 minute hack to do that. But the first thing is that फिजिक्स में एक जनरल प्रॉब्लम आती है कि सर जब क्वेश्चन कराते हैं तब तो समझ में आ जाता है, लेकिन घर में हमसे नहीं होता है. सो देयर इज वेयर अ मास्टरी इज रिक्वायर्ड. अब क्वेश्चन है कि मास्टरी कैसे किया जाए. मान लेते एक क्वेश्चन आप सॉल्व, सपोज लेट्स स्टार्ट विद दिस, कि एक सिंपल क्वेश्चन आपने सॉल्व किया. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट जस्ट आस्क इट टू योरसेल्फ, कैन आई रिप्रोड्यूस द सेम आउटकम इफ आई गेट अनदर क्वेश्चन. And if not, इसका मतलब there is some more requirement of additional practice. यानी अब आप क्या करेंगे, उससे related जितने भी questions हैं, because nowadays there is no any scarcity of resources, उससे related जितने भी questions हैं सबको आप उठाइए. Like एक simple example लेते हैं, मान लेते हैं आपको constraint relation finding में problem आती है, क्योंकि आप जिस किताब को follow करते हैं, there are only 2 or 3 examples. अब बात है कि when you start solving plenty and plenty and plenty of numericals, उससे क्या होगा, the concept starts developing very organically, और एक स्टेज के बाद क्या होता है, suddenly you start getting that confidence. It is something like Ishita must be knowing how to ride bicycle. You just remember कि जिस समय आप bicycle चलाना सीखते हैं तो पीछे someone holds, और पहले आप कांपते 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 चलाते, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि थोड़ी दूर जाने के बाद आप गिर जाते और बड़े गुस्से से पीछे मुड़ते कि आपने छोड़ा क्यों, और देखते हैं कि आपके जो भाई जो आपको सिखा रहा है वो तो 1 किलोमीटर दूर है, यानी वो पहले ही आपको छोड़ चुका है, एंड यू ड्रोव दैट बाइसाइकिल फॉर 1 किलोमीटर लॉन्ग विदाउट एनी सपोर्ट. तो वो जो एक कॉन्फिडेंस वो आ जाता है, बिलीव यू मी, इट कम्स. लेकिन इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट यू नीड टू बी इन अ पोजिशन टू डिवोट दैट अमाउंट ऑफ टाइम. अजय सर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था फ्रॉम बिहेवियरल साइंस कि the more you spend time with someone else, you start liking it. So in that given case, एक बार आप time spend करने लगोगे, पहले उसको एक devil form में मत देखो, physics ऐसे कैसे बहुत गंदी है, please don't do in that way. Start solving, start repeating, or repetition is the key. I again say repetition is the key. Let me quote Bruce Lee in here. He said, I fear not the person
who has practiced 1,000 kicks once. I fear that person who has practiced one kick 1,000 times. So अगर आप मुझसे पूछेंगे इसकी golden key क्या है, it is simply repetition. सबसे पहली बात प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए. This is the area where I have the problem. Start collecting the resources, start solving it, start taking help. Practice के अलावा और कोई मंत्र नहीं है. That is only the case. The more you practice, the better you get. Thank you so much, sir. That was a very wise word shared by you. No. So, it was Bruce Lee indeed. yeah. Thank you. So let's take another live question. We have a question from Padma. She's asking, should we go through all the questions before starting to answer or simply start answering? Because it is online mode and navigating between questions is difficult. Ajay, sir? So I think you should go through the bird eye view. If you want to check, if you want to spend 5 minutes before the exam, then you can go through all the subject physics, chemistry, and maths. And then already you started, then you can, what's the subject you like first? Maths, physics, chemistry. And you can start any one subject which you most like. So अगर 5 मिनट अगर या 2-3 मिनट अगर आप टॉगल करके सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं तो आपको एक फेयर इनफ आइडिया आ जाता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और फिर जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका एक्यूरेसी पार्ट बढ़ जाता है क्योंकि आपने पूरा एक बार पेपर पूरा देख लिया है, व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर मोस्टली आस्किंग, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही मेरा टाइम भी सेव होगा और कौन सा मैं कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. So you can decide at the day of exam, or but before exam, I think for a few more things you should take care. आप एग्जाम सेंटर के ऊपर थोड़ा टाइम से पहले पहुंचे. आपको लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं तो अगेन वो एंजाइटी प्रेशर हो जाता है, सीट कहाँ पे है, फिर वो दिखती नहीं है, सामने सीट होती है तो भी नहीं दिखती है. तो या अगर पॉसिबल है तो एक दिन पहले वहाँ पर राउंड लगा के आए एग्जाम से पहले, और अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे फॉलो करें, और थोड़ा सा पहले टाइम से पहुंचेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे और आप अच्छे से कर पाएंगे. सो you can check the entire subject physics, chemistry and maths in a one go for the 2 to 5 minutes, and then you can decide. This is the answer from my side. Thank you so much, sir. So, Sharma sir, needless to say, the 3 hours of the exam are very crucial. And a lot of students want to know how to make the optimum use of the exam time. Right. I mean, that's very important. We might be knowing a lot of things, but when it comes to execution, when it comes to answering, when it comes to performance, where we know we are being judged, we are being evaluated, thoda anxiety pressure aa jata hai. One thing very important, in the beginning you should be slow on your approach. Read the question slowly, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, ब्रेन बॉडी इसके माइंड और इसके सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो एटलीस्ट इन द बिगनिंग 5-10 मिनट्स यू शुड बी स्लो ऑन रीडिंग, स्लो ऑन पिकिंग अप ए क्वेश्चन. और उसके बाद क्या होता है कि ब्रेन हाईजैक कर लेता है, फिर तो आपको पता ही नहीं लगता आफ्टर 15 मिनट्स कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मुझे क्या करना चाहिए. सो फर्स्ट, दैट इज इन द बिगनिंग, डोंट ट्राई टू रश, डोंट ट्राई टू पैनिक कि जल्दी करूं टाइम ना हो जाए. सो फर्स्ट 10-15 मिनट्स थोड़ा कूल हेड से, काम हेड से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम भी हो चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एक दो वही क्वेश्चन पिकअप करो जो इजीली सॉल्वेबल है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यू विल फील पेपर इजी आया है. नंबर 1. नंबर 2, you should learn to take a break after 45 minutes, 50 minutes, a kind of review. You take a break, I mean a body clock, set your body clock in such a way, क्योंकि जब हम लगातार ब्रेन को यूज करते हैं, एक स्टेज आती है कहीं हैंगओवर, हैंग ना हो जाए, प्रोसेसर हीट ना हो जाए. तो इफ यू कैन लर्न और प्रैक्टिस कि ओके रफली 30-35-40 मिनट्स के बाद आई विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक, लुक लेफ्ट राइट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, सो दैट यू कैन गिव ए दैट रिलीफ टू द ब्रेन, वो हीट अप ना हो.
हम burned out stage में ना जाएं, because many students every year they say सर पहला घंटा बहुत अच्छा बीता, दूसरा घंटा भी बहुत बीता, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया क्या पूछा क्या आ रहा है, I could not even look at or answer the easy problems. So first few minutes, say 5, 10, 15 minutes, go very slow. Number 3, don't expect anything from the question paper. हम generally expect करते हैं एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर है, मुझे वही पूछा जाए जो इजी हो, मुझे वही पूछा जाए जो सब कुछ मुझे आता हो. ऐसा नहीं होता एग्जामिनेशन में. समटाइम्स आपने एक्सपेक्टेशन कुछ सेट किए हैं और शुरू के 2 क्वेश्चन में ही वो बॉम्ब रखा हुआ है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर इज डिजाइन in IIT JEE because it's a low scoring paper. So the question paper format is such, all codes, all formats, that in between they put questions selectively कि वहां पे ट्रैप है, आप उसके नजदीक जाओ और उसके ऊपर पैर रखो, नीचे माइन थी, बॉम्ब फटा, बूम, यू आर आउट. तो one has to be very slow in approach. Learn to take a break after 40 45 minutes, 50 minutes, maybe after one subject. ब्रेन को थोड़ा सा ब्रेक मिले. थर्ड थिंग कि कभी ये ना सोचें कि मैंने कम अटेम्प्ट किया है, बिकॉज जब हम क्वेश्चन लीव करते हैं, सपोज यू आर गोइंग टू स्ट्राइक अबाउट 60% क्वेश्चंस, तो यू आर लीविंग सम क्वेश्चंस इन बिटवीन. हम जो छोड़ते हैं वो ज्यादा याद रह जाता है. अरे मेरा वो भी छूट गया, हम याद नहीं कर रहे, सबकॉन्शियस माइंड में वो आ रहा है, अरे फर्स्ट छूटा, सेकंड छूटा, थर्ड छूटा, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता. नो, यू हैव टू लीव, you have to be selective. Save some time for the last 15-20 minutes. अगर इतना टाइम आपने बचा लिया, then maybe you can go back to the subject where which you were liking the most. क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे थे, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पा रहे थे, कॉन्फिडेंस, एक गट फीलिंग बड़ा अच्छा आ रहा था, दिस हैज गॉन वेरी वेल. सो दैट 15 minutes you can always go back, review, look at the questions which you marked for review. ऐसा ना हो ऑनलाइन मोड में कि कोई क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए मार्क किया और बाद में आपने उसको कंक्लूड नहीं किया, so it will be out of evaluation. So these are few things one has to remember between those 3 hours. 95% students get a feeling while attempting the paper, oh, that paper is tough for me, probably today is not a good day for me, but ये सबके साथ हो रहा है. If you could make a comeback, if you have that tenacity, ability to bounce back, पेपर टफ होगा, पूरा नहीं है, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, आपको तंग करेंगे, वो रखे इसलिए गए हैं कि आप उस पे पैर रखो और उड़ जाओ, आप एलिमिनेशन राउंड में चले जाओ, बाहर हो जाओ यहाँ से, because out of 10 lakhs you want to shortlist few thousands, so that means it is not selection, it is basically rejection. So for rejection there are bombs fitted here and there in the 3 subjects in different formats. Stay safe from those issues और बीच में break लेके make a comeback. It is tough for all. Everybody is going through the same situation. To have confidence in yourself, nerves जितना cool काम आप रखेंगे उतना brain को आसानी होगी respond करने में. और अगर आप brain के ऊपर बहुत ज़्यादा pressure डालेंगे, वो प्रेशर कहाँ से हम डालते हैं? अपनी एक्सपेक्टेशन से, अपने मन से, मेरा मन ये कह रहा है, तो द ब्रेन सेज कि बेटा मन से ही सॉल्व करा ले क्वेश्चन, व्हाई आर यू कमिंग टू मी? सो अलाउ योर ब्रेन टू फंक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस. डोंट पैनिक. पैनिक फिर भी होता है, प्रेशर बनता है. सो की इज try to learn 1 or 2 small breaks, look around left and right. I very often tell my students कि अगर कुछ ऐसा हो गया, पैनिक क्रिएट हो गया, so look for a fun moment. Think of a fun moment there. मैं बड़ा simple सा example देता हूँ. Look at the room left and right. Look at the people. What are they doing? Make fun of them. अरे क्या पागल किस कलर का शर्ट पहना है, इसको पता भी नहीं कितना गंदा लग रहा है. So if you can think of some moment which can detach you from the examination thing, fun, and then you come back again, brain will start. Probably it will pick up. It will take up, and you would be able to respond in a better way to the problems. So that is what I want, the strategy of those 3 hours. And one more thing, after this attempt, the next attempt again, it is there. All the students would get a fair amount of time, learn from the good things of this attempt, learn from the mistakes you made in this attempt, and
obviously you have to prepare for the final round, the fourth attempt also. So the time interval after this phase and the next phase, you would require more on a strategy side, less on. Today we were generic approach 3 hours, but after this phase, you have to take a review. You have to recall all what you had gone through this phase, and you would be able to do much better in the next one. Thank you so much, Sharma sir. So, before we conclude the session, let's take one last question. Nabin sir, any key points or do's and don'ts that students should remember in order to avoid common mistakes and score better? Yes, I'll go a bit in a faster mode, accelerated ho jaunga. But still, I have collected lots of points. हालांकि do's and don'ts के बारे में हम बचपन से ही ज्ञान सुनते हुए आ रहे हैं कि स्कूल में सर कहते कि बेटा आसान क्वेश्चन से शुरू करना, मम्मा कहते कि बेटा क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़ना, तुम क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़ते नहीं हो इसलिए मार्क्स कम आते हैं. But let me share some practical tips. Altogether, I think that will go around 7 or 8, but I'll do it quickly. The first point, number 1, is abhi se exam day ke liye ek strategy banaiye. This has been repeated time and time because it's a very working, hack, so that you would have an actionable plan for that day. Number 2, घर से जब आप दही चीनी खा के निकलोगे, now forget your background, क्योंकि हम उस 3 घंटे को या उस 3 घंटे में परफॉर्मेंस को कैसे मैक्सिमाइज करें, we are talking about that. तो एक बार दही चीनी खा के निकले, अब now forget. इंजीनियर बनना है, सिलिकॉन वैली में जॉब करनी है, सपना पूरा करना है, और इनकेस स्कोर अच्छी नहीं होगी तो व्हाट वुड माय एनआरआई बुआ जी थिंक? दीज आर ऑल जस्ट नॉनसेंस. आपका फोकस बस इसी बात में रहेगा कि एग्जाम हॉल जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है और बबल मार्क करना है. ऑफ कोर्स सही बबल मार्क करना है. दैट शुड बी द फोकस. नंबर 3, ध्यान देना, आपके पास टोटल टाइम 3 आवर्स से कम होगा. अरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, सारे चीज अगर ऐड करोगे तो -20 मिनट्स, यानी इफेक्टिव 2 आवर्स 40 मिनट्स है. इसके लिए अभी से पर सब्जेक्ट कितना टाइम अलॉट करना है डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसका आप कंपाइलेशन करें. ध्यान देना, 3 आवर्स इज नॉट गोना बी योर इफेक्टिव टाइम. नेक्स्ट, be prepared even for situation like हो सकता है first consecutive 3 questions आप नहीं कर पाओगे. Be prepared for that. How will you still maintain your composure and proceed? पहले ही mentally prepared रहोगे तो वहां जाके शॉक नहीं लगेगा. Let's go for number 5. Exam time is not to settle scores. हिसाब पूरा करने नहीं जा रहे हो पहलवान जी. Maybe you would not be able to solve your favorite topic. भाई favorite topic आपका alternating current था, but उसी में आप फिसल गए. It happens. Don't go in an ego trip and get stuck there or lose hope. Happens. Move forward. Busy people don't have time for tears. नहीं हो रहा, कोई बात नहीं. Ego trip पे नहीं जाना. Number 6, on a broader aspect, जैसे मान लेते आपने डिसाइड किया है कि पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स करूंगा. That does not mean कि first 1/3 you would stick to physics. You decided your chronology. आप physics से start कीजिए if that's your convenience. But once you start, go with the flow. Start encashing all the easy questions of the entire paper. Entire paper, जहां जहां आपका confidence है करते रहिए. एक बच्चे ने सवाल भी पूछा था कि क्या हमें मतलब entire उसमें आता है. You can follow this strategy. Start कीजिए, जो question हो रहा है कीजिए, बैग में डालिए और आगे बढ़िए. और उसके बाद जो रह जाता है ना, वापस आके फिर चुन के बदला लेना एक एक क्वेश्चन को. बट पहले एनकैश तो करो. नंबर 7, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज 5 क्वेश्चन दैट यू कैन स्किप. तो बहुत सारे बच्चे क्या करते, क्रोनोलॉजिकली वो सॉल्व करने लगते. अरे ध्यान देना, देयर इज एन ऑप्शन वेयर यू कैन स्किप. देयर इज एन ऑप्शन. तो एक बार गो थ्रू करें, मान लेते जो सॉल्व कर पा रहे, दैट्स डन. आगे बढ़िए, नहीं हुआ तो आगे स्क्रॉल कीजिए. दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. इंटीजर बेस में ये ध्यान देना, बिकॉज जनरली आखिर में ही करते हो, सो यू वुड हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग one by one. डू रिमेंबर देयर इज एन ऑप्शन. और ये भी ध्यान देना कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं. अगर नहीं है, दिखा देना उस दिन तुक्का क्या चीज होती है. जस्ट शो इट दैट. और आखिर में एक आयरनी है,
कमा मैम, दुनिया में भूखमरी से कम ओवर ईटिंग से ज्यादा मौत होती है. इट्स अ WHO डेटा. इन आवर कॉन्टेक्स्ट मैंने पाया है कि बच्चे इजी क्वेश्चन में भी उतने ही फिसलते जितना कि डिफिकल्ट में. दिस इज द मोस्ट ट्रेजिक पार्ट. डोंट कैरी दिस थॉट कि अरे ये तो जेई मेन है, सो हाउ कैन दे आस्क सच एन इजी क्वेश्चन एंड स्टार्ट ओवर थिंकिंग एंड मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स. ये प्रॉब्लम है. बहुत सारे बच्चे जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं वो सोचते सर इजी में जाके फिसलते, बिकॉज यू आर मेकिंग एन ओवर एक्सपेक्टेशन. बी वेरी रैशनल. डज दैट मेक सेंस? अगर आसान है ठीक है ना, दैट्स अ रिवॉर्ड, एंजॉय इट, आगे बढ़िए. So these are the things. Let me recap. Number 1, make strategy. Number 2, forget your background. You just need to solve the question. बुआ जी क्या कहेंगे सोचो मत, जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जी हाँ सही बबल भी करना है. Number 3, effective time is less than 3 hours. Number 4, be prepared for the worst. आपकी स्ट्रेंथ एरिया हो सकता है आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो. Number 5, don't lock horns with the question. मतलब क्वेश्चन के साथ ना, मतलब आज तो मैं दिखा के रहूंगा कि मतलब मेरी फिजिक्स कितनी स्ट्रांग है. नो, दैट्स नॉट द केस. एग्जामिनेशन है, आगे बढ़ो. नंबर 6, फिनिश इजी क्वेश्चन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस. Number 7, integer में there are options, so be careful. And number 8, the most sweetest part, don't get nervous in easy question. सुनने में बहुत आयरॉनिकल लग रहा है कि डोंट गेट नर्वस इन डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दैट्स एन इजी क्वेश्चन एट ऑल. तो इसके अलावा बचपन से ही ज्ञान ले रहे हो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है और आसान क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है. आई थिंक दीज 8 points would really help to the students. That's all. Thank you so much, sir, for the amazing tips. So this brings us to the end of today's session. Thank you so much, Ajay sir, Sharma sir, and Nabin sir for joining us for today's webinar and sharing wonderful tips and resolving the queries of students. Thanks a lot, ma'am. It was indeed a pleasure. So we would also like to thank everyone for attending the session, and particularly for all the great questions. We'll appreciate if you could take out some time and share your valuable feedback regarding today's session. You'll find the link to the feedback form in the description box below. Thank you again and for attending today's webinar. We hope you stay safe and healthy, and we look forward to joining you again for another